Hello students, I am GUNVANT PATEL from Logic Institute and today I am with the next lecture of electrostatics, and in this lecture we will talk about our next topic, that is capacitor. Capacitor is very important topic of the electrostatics. ठीक है ना बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्टोर द चार्ज. If any conductor stored some amount of charge, then that conductor is known as capacitor. So capacitor may be any plate, capacitor may be any rod, मतलब conducting rod होना चाहिए. ठीक है ना बच्चों। कोई भी metallic object which can store the amount of some amount of charge is known as what? Capacitor. So here the definition of capacitor is very simplest, but we have to understand how to increase the capacity of storing charge. ठीक है ना बच्चों। For that we will discuss about the capacitance. That is, the capacitor is nothing but a one kind of device and capacitance is a property of capacitor. ठीक है ना बच्चों। तो let's start. Capacitor is the device which is made up of conductors to use to store the electrical energy in the form of electric field. And we know that electric field can be produced by static charges. मतलब there will be some kind of charges are stored in those conductors. अब वो कंडक्टर जो चार्ज है वो कितना स्टोर कर सकता है, वो उस कुछ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा. तो लेट अस एक्सप्लेनिंग सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन कैपेसिटर. ठीक है ना बच्चों। तो उसमें फर्स्ट होगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. अब ये जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है ना, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट but very useful in case of capacitor, because we will define the capacitance of capacitor. Capacitance is a one kind of property of capacitor. अगर आपको capacitance समझना है तो you have to first understand the dielectric breakdown. What is the meaning of dielectric? Dielectric is nothing but insulators. All insulators which are known as what? Dielectrics. ठीक है ना बच्चों। तो अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मतलब सम काइंड ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लॉस करना. अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लॉस कर लेगा तो हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स. अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे एकदम सिंपल सा है. कंसिडर वन स्पीयर, मेटालिक स्पीयर विच इज प्लेस्ड ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड. हम देख सकते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने क्या किया, वो पर्टिकुलर स्पीयर को हमने यहाँ पे ये स्टैंड पे रखा हुआ है एंड वी विल डिपॉजिटिंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस स्पीयर. अगर आप इसके ऊपर चार्ज स्टोर करते जाओगे तो इट स्टोर्स सम अमाउंट ऑफ चार्ज. वो चार्ज स्टोर करते जाएगा. समझ रहे हो ना बच्चों। जब तक आप उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतना वो चार्ज स्टोर करते जाएगा. आप उसके ऊपर चार्ज रख रहे हो, वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, कैरी कर रहा है. ठीक है ना बच्चों। तो आफ्टर सम टाइम ये चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा है. अगर दिस स्पीयर इज प्लेस्ड ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड, मतलब अब ये जो चार्ज है वो कहीं पे भी स्प्रेड नहीं हो रहा है, विद डिपॉजिटेड ऑन दिस स्पीयर ओनली. अब क्या होगा, जैसे जैसे आप चार्ज स्टोर करते जाओगे
वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज ऑफ E इज इक्वल टू KQ/R², इन विच वी कैन से दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। मतलब जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, वो आसपास अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब क्या होगा, यही चार्ज बढ़ने की वजह से और एक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट, पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू KQ/R। इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है ना बच्चों, दोनों प्रॉपर्टी अब इंक्रीज हो रहे हैं। एट वन इंस्टेंट उसके आसपास जो एयर है ना बच्चों, वो एयर इज वन काइंड ऑफ इंसुलेटर, दैट इज ड्राई एयर इज वी कैन से दैट प्योर इंसुलेटर। ड्राई एयर ऐसा इंसुलेटर है जो इजीली कंडक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से उसके आसपास का जो एयर है विच गेट्स आयोनाइज्ड, ये आजू बाजू का एयर जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस चार्ज द एक्सेस चार्ज ऑफ दिस स्फीयर विल लीक फ्रॉम इट। मतलब इसके ऊपर जो एक्सेस चार्ज आ जाएगा, जो अमाउंट ऑफ चार्ज हम उसके ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से जो ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, वो क्या करेगा, आप खुद नहीं रख पाएगा, वो क्या करेगा, उसको लीक कर देगा। एंड इन दैट केस दिस एयर अराउंड दिस sphere loses the property of dielectric and this phenomena is known as what, dielectric breakdown। तो लिखेंगे कि when we put the charge on the sphere, the electric field and potential increases at some instant of time. The electric field of sphere becomes very large, so that it ionizes the air around it. In this case, we can say that the air loses the property of dielectric and the excess charge will leak from the sphere। क्लियर बच्चों, मतलब यहाँ पे एयर ने क्या किया, अपनी डाइलेक्ट्रिक का जो प्रॉपर्टी था वो लॉस कर दिया। दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो लिखेंगे दिस फिनोमिना of losing the property of dielectric is known as dielectric breakdown। ठीक है ना बच्चों, इट्स अ वेरी सिंपल इज। एंड द amount of electric field, dielectric breakdown, and the amount of electric field or the strength of electric field, the strength of electric field
up to which the material remains dielectric. Material remains dielectric is known as, that electric field is known as dielectric strength. Dielectric strength. हर एक मटेरियल का डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगा कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो डायलेक्ट्रिक ही रहेगा. आफ्टर देन ऑनवर्ड्स it will get ionized and become conductor. So it's very simplest. Here we have to understand that dielectric breakdown is a one kind of phenomena in which the material loses the property of dielectric मतलब insulating, अपनी insulating property को उसने लॉस कर लिया ये एयर ने due to this high electric field. ठीक है ना बच्चों. तो यहाँ पे फिर जो एक्सेस चार्ज होगा वो एक्सेस चार्ज क्या होता जाएगा, लीक होता जाएगा. ठीक है ना बच्चों, वेरी सिंपलेस्ट. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ठीक है ना बच्चों, कॉपी डाउन दिस.